This is the topic for today, basically. बट स्टार्ट करेंगे माइंड योर ओन बिजनेस. हम लोग कई बार किसी को बोलते हैं या कोई हमें बोलता है कि माइंड योर ओन बिजनेस, एंड वी कीप डूइंग वॉट एवर वी आर डूइंग बिकॉज प्रॉबेबली मैनी ऑफ अस डोंट नो हाउ टू माइंड आवर बिजनेस. तो मैं कल बात कर रहा था मेरी डॉटर से, एंड शी सजेस्टेड दिस that this is a wonderful topic under which we can discuss many other important things, and one very super tool, MYOB, mind your own business. If we understand what is minding my own business, तो वो simple हो जाएगा, right? Then most of us will mind our own business so that किसी और की life में हम चंचुपात ना करें. Now, chanchupat is Hindi word for my children and everyone. Is interference in other people's lives is chanchupat. And अगर मेरे पास इनफ काम है, मेरे पास इनफ डायरेक्शन है, मुझे क्या करना है, मुझे क्लैरिटी है, तो मुझे किसी और की एक्टिविटीज़ में एक्सेसिव इंटरेस्ट लेके गॉसिप करने का टाइम शायद नहीं मिलेगा, which is sometimes bad, but mostly it is good. Panchat in Gujarati. Yes, Ital, you're right. So this is like doing self-panchat. Self-growth, self-love, all these words are very important. But मैं ऐसा समझता हूँ कि बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, बुक्स भी बड़ी बड़ी पढ़ सकते हैं, बट जब तक कोई चीज़ एक्शन में, और एक्शन में लाने के लिए उसको बेसिक सिंपल करना ज़रूरी है. वो कहते हैं ना मुन्ना भाई में, बोले तो. सो ये बोले तो वाला टॉक शो है कि वी डोंट टॉक अबाउट फिलोसॉफीज एंड बिग स्टफ. इट कम्स, आई रीड, यू रीड, आई नो यू रीड, बट जिंदगी में कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लाइक टेक्नोलॉजीज, लाइक नासा इन्वेंट्स वंडरफुल टेक्नोलॉजीज, डिस्कवर्स और इन्वेंट्स आइदर, एंड देन इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू कि हम लोग जिंदगी में उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें. जैसे टेली कम्युनिकेशन की बात हो गई, राइट, या मेमोरी फोम की बात हो गई. आई हर्ड दैट, एंड मे बी आई एम रॉन्ग बट करेक्ट मी, दैट मेमोरी फोम वॉज इन्वेंटेड बाय द स्पेस टेक्नोलॉजी पीपल, एंड देन फाइनली इट केम डाउन टू everyday use. So that's what I think I like about technology, that yes, wonderful complex ideas are important, absolutely, they are the source, but then when you bring it down to the simplest possible form जो हम रोज डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सके, then it becomes really wonderful thing. Then we start to harness the benefits of those technologies. Now same thing applies to all the spiritual and self-growth fundas and inspirational books. What I gather from inspirational book is, like yesterday we were talking on one of other live show, that not to take the inspiration literally like a prescription, because वो जो author ने लिखा है वो उनकी ज़िंदगी में effective रहा था. ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आप कॉपी करोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी इफेक्टिव रहेगा. सो यू नीड टू मॉडिफाई दोज आइडियाज़ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. दैट्स वन. एंड सेकेंड, मुझे पता है अगर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इन जनरल, राइट, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट, बट इफ आई नो जनरली वेयर आई एम गोइंग, then I will be very interested to read fresh ideas and then convert them as per my understanding into my life. So summarizing everything, write your own book. Now हम लोग ऑथर्स को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग होते हैं, फ़र्क ये होता है कि दे ऑब्जर्व देयर लाइफ वेरी केयरफुली, हर एक छोटी छोटी चीज़ को भी. तो गोइंग बैक टू दिस पंचायत थिंग, अगर हम पंचायत करेंगे तो ज़िंदगी चली जाएगी, राइट, वी ऑल नो दैट. बट एक एग्जाम्पल ये ऐसा है कि, एंड आई हर्ड दिस said by Naval Ravikant in much crisp, short words, and I just want to paraphrase that, not exactly in the same words, but कि अगर आप 5000 years future में चले गए and then look back, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, who cares, right? It will all be deleted. Even if you are a god, 10,000 years, it will be all deleted. इस planet की billions of years की life में हम तो कल पैदा हुए हैं, तो आगे जितनी भी
चीज़ें हुई हैं, इट्स नॉट रिकॉर्डेड एंड इट्स ऑल गॉन, एंड लाइकवाइज हम जो अभी कर रहे हैं विल ऑल्सो बी गॉन. सो विद दैट पर्सपेक्टिव यू स्टार्ट टू सी लाइफ फ्रॉम थोड़ा सा डिस्टेंस, दूर से, जूम आउट, कि किसी की और की पंचायत करने में कुछ उपजेगा नहीं. सेल्फ ग्रोथ या हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ों पर, इवन इफ इट इज स्मॉल, इफ यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन, देन थिंग्स स्टार्ट टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस. एंड हो सकता है कि आप जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो भी एक किताब बन जाए. वी ऑल आर यूनिक इंडिविजुअल्स, जैसे आपने सुना होगा फ्रॉम जेनेटिक्स एज वेल, दैट एवरी वन इज यूनिक. Right? Write your own book, create your own story, and that will be wonderful. And then you will not need to mind in other people's business. पंचायत बंद हो जाएगी. Right? This was primary. आज शायद मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा. I don't know. I'll try to keep it short, but because ये सब्जेक्ट ऐसा है कि मैंने कई बार शुरू किया लिखना and everything, then फिर छूट गया, then again restart हुआ, छूट गया. बहुत सारी डायरीज ढूंढी, टेढ़ी मेढ़ी. That's the first thing you go and buy. Different types of pen, which I'm learning from Neeraj, because he used to carry like 10 different pen. लिखने का शौक नहीं था उसको, but pen बहुत सारी, so I used to borrow pen from him. So those kind of things kept changing, different diaries, different pen, ऐसे लिखे वैसे लिखे, and then finally burst. But past some time, I think I'm getting the hang of, how to maintain this thing, how to extract joy, because अगर मजा नहीं आएगा तो वो बंद हो जाएगा. कोई भी एक्टिविटी हो या तो वो बर्डन बन जाएगी, तो बर्डन नहीं करना है. द एफर्टलेस इज द रूल. सो दैट्स, आई थिंक आई सी सम क्लैरिटी नाउ कि किस तरह से मैंने इसे एफर्टलेस बनाया है. एंड आई थिंक इट्स सो मेनी थिंग्स. इट्स अ स्पिरिचुअल टूल अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ एंड टू डू एंड प्रोडक्टिविटी टूल. येस, इट्स मोर लाइक अ स्पिरिचुअल टूल फॉर मी. So I thought I'll share with you, I'll speak to you and give you the entire lineup of things. So it will be 10 points. 10 points. Someone can write, but I will write also. And if you are, and someone suggested me yesterday that a good friend, that I should create a Google Doc and then share that thing. So हमने जो बात की उसके pointers, so that it becomes kind of a reminder, which is a wonderful idea. Eventually, I'm growing. I'm just beginning with this small sharing podcast, you can say, on Instagram, and eventually I want to expand to many other important global platforms. Like one is YouTube. But I don't have many followers on YouTube, so they are not allowing me to go live. So if you think I'm good enough and I should share on you all want to join in and share with me, then let's think about it. I'll share the YouTube links, and then if you think I'm eligible, let me know. So let's start. 10 points, okay? I'll briefly go through those 10 points and then एक के बाद एक उसको खोलते जाएंगे, right? If someone wants to write, please. Otherwise, this video will go in the record. It will be like a post, so we can refer it at any point of time. This is for my self-reflection. So, like say number 1 point is that journaling is many things. एक टू डू लिस्ट होता है, एक प्लानर होता है, स्केड्यूलर होता है. एक होता है कि अपने थॉट्स लिखना, सिर्फ आइडियाज, माई लाइफ जर्नी एंड सच, माई डेली इंसिडेंट्स, माई लर्निंग्स. तो मैं एक ऐसी बात प्रपोज करने जा रहा हूँ अब, मॉडल जिसमें ये सारा कुछ है, राइट, इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, इन द सेम, बट इट्स काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. अब क्या नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप नेक्स्ट मंथ क्या करना है, नेक्स्ट ईयर क्या करना है, वो रिमाइंडर्स डाले. बिकॉज आई हैव डन दैट थिंग व्हेन आई पुट थिंग्स दैट मुझे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ ये करना है. probability is that I will not be able to recall that thing and मैं भूल जाऊंगा, and that my trust and relationship with journaling will start to break. So I have understood that journaling is basically for reflection. पीछे जो हुआ उसको एक बार और देखने के लिए से reflection कहते हैं. Then the question comes that then फिर आगे कुछ काम है तो उसको कैसे करना है. I will teach you that. I will show you how to do it because I am doing it and it works. You do write down जो फ्यूचर में करना है, बट वेन यू रिफ्लेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ट्रांसपोर्ट दोज आइडियाज इन द डिजिटल फॉर्मेट. लाइक फोन का रिमाइंडर इज अ वंडरफुल थिंग, यूज इट फॉर दैट थिंग. बट अगर पहले फोन आ गया तो जर्नल नहीं आएगी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट द प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी प्लेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इज योर जर्नल, राइट. उसके बाद फिर हम उसको ब्रांच आउट करेंगे ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. कई चीज़ें ऐसी होती है
जो बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती है, दैट्स वन. एंड सेकंड कि उसको इमीडिएटली सर्च किया जाए, वो भी ज़रूरी होता है, जो डिजिटल में अच्छी तरह से होता है. सो वी गो टू डिजिटल बट एज अ सेकेंडरी प्लेटफॉर्म. दैट्स पॉइंट नंबर 1. अच्छा, I said I'll go through point 1 to 10 but skip that part. Let's just go 1 2 3. Okay, आराम से. Point number 2 is now you have a diary. अगर आप नहीं लिख रहे हो then take a blank sheet of paper and make a kind of a कच्चा plan. If you are already writing then take a blank sheet and do as I say. No, take notes and then add your inputs also. Okay, this is not prescription, this is something which you can add into your own knowledge because you also have certain special skill which I do not have. If you add what I have to share, if it makes sense to you, and what you already have, then it will be a multiplier set. Point number 2, in the journal usually make a week's plan. एक वीक का, एक हफ्ते का प्लान, because these 7 days का प्लान is important. I need to know what's happening on XYZ day. उसके आगे जो है that will be on my phone, that will be reminded. जो रूटीन में आती चीज़ें वो भी फ़ोन पे है, वो रिमाइंड होती है. बट टू सी अ वीक प्लान इज इम्पॉर्टेंट. दैट्स अ क्रिस्प स्मॉलर यूनिट. देयर इज अ बुक कॉल्ड 4000 वीक. इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू लिव योर लाइफ एंड ऑल द गुड स्टफ. बट देन इट मेक्स सेंस दैट व्हेन यू सी अ वीक व्यू इट गिव्स यू क्लियर आइडिया कि मेरा ये वीक किस तरह से बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और वो शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह सकती है. आज संडे है, आई विल प्रोबेबली रिमेंबर वेडनेसडे क्या करना है, थर्सडे क्या करना है. So once you train your brain to see 1 week, it starts to give you peace. You know some clarity कि मेरा ये दिन free है, ये दिन occupied है. So week view is important. Now let's open this journal. हमारे पास एक डायरी है, छोटी मोटी कोई भी हो. Don't worry about size. Don't rush to buy diaries like all my family members. They enjoy buying diaries, फिर लिखते नहीं हैं. They have many blank diaries. I also have it. I'll give you. You have a diary. Open that thing, right? और हम लोग गुजराती स्कूलों में जो पढ़े वो पहला पेज छोड़ देते हैं blank. I don't know why, but somehow. But don't leave it blank. Put your name on that. Put your address, put your phone number, because अगर वो डायरी खो जाएगी तो it should come back to you. वो किसी के काम का नहीं है, उसमें क्या उखाड़ लेगा कोई, right? That person will return it back to you. And maybe if you are lucky, if you lose it with some interesting person and that person come find you, give you diary, तो काम हो जाएगा ना. Use that. But yeah, it's important to write your name, address and everything because it's possible that you may forget. It should come back to you. It's important. After that, so we talked about कि it's not for reflection. Week view is important. Now we are starting to write the diary. Write your name first. अगर नहीं लिखा है and you have a journal, write your name, phone number and address. My advice, because काफ़ी बार खो जाती है and it's good that it comes back. Point number 3. अब नाम लिख लिया, now you begin the diary. Don't begin by just writing everything, step by step. पहले in the front, excellent idea, and I learned that from one of our diary friend. I'm not able to recall the name. If someone is into manufacturing diaries, please send me a message. I would like to mention that person. She is a wonderful person, has a Instagram account and she is working with these diaries. You know that I'm facing so many people, so it's slightly difficult to recall the name, but I'll need help here. Habit tracker. That's what you begin your diary with. तो अगर आपकी 2 3 4 ज़्यादा हो गई ना, जो भी है अच्छी हैबिट्स है और आपको लगता है उससे आपको डिलीजेंटली मेंटेन करनी है. इफ़ डिलीजेंट इज द राइट वर्ड, करेक्ट मी. तो ये बहुत सिंपल चीज़ है कि जस्ट राइट डाउन 1 to 31, चाहे जितने भी दिन हो, 28 हो, 30 हो, 31 इज अ सेफ. उससे आगे नहीं होता है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली. सो नेम ऑफ द हैबिट एंड दीज 31 बॉक्सेस. इट कुड बी लाइक 15 and 15 and leave spaces every time, every day when you do that एक्टिविटी ऑफ हैबिट, टिक मार्क. उससे क्या होगा, उससे मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो नेक्स्ट दिन फिर से वो करने का मन होगा अपने आप. वो फोर्स नहीं करना पड़ेगा. दैट विल पावर विल बी नॉट नीडेड, या थोड़ा सा ही चाहिए होगा. ग्रेजुअली फिर वो निकल जाएगा. इट विल बिकम एफर्टलेस. बट दैट टिक मार्क इज लाइक यस. सो हैबिट 31 बॉक्सेस,
leave spaces every day, just tick mark. You can start that today. आज whatever date it is, April, बाकी के जो महीने हैं, thank you मितुल गाडिया, thank you. So start from today and then remaining of April days, just do this tick mark. अच्छा, बहुत भारी वाली हैबिट मत लिखना, बिकॉज वो फिर लोचा होगा, यू विल नॉट, फिर वो निकल जाएगा सिस्टम से. सो पिक समथिंग विच इज यू नो इट्स गोइंग टू हैपन, it's doable, it's not climbing Mount Everest, right? It's easy, it's going to be just that you need a constant reminder, so that could be a reminder thing. So habit. Next point, this is point number 4, the back of the diary, right? In the back it's all about lists. कौन से lists? Yes Kabira, I'll bring you in after just finishing the initial part. In the back it is lists. List में interesting things only, right? Sometimes uninteresting, but mostly interesting things. List में there can be travel places that you want to go to, movies, books, food places you want to try, books you want to read. Because कई बार ऐसा होता है ना, we're meeting people discussing something and someone mentions certain name and say हाँ यार ये अच्छा है, and then you start to open your phone and you start to type in and start searching, and then you go into a different world. Just have a page for books and write it down. This is to be researched later on. उसी वक्त करने की जरूरत नहीं. जब किसी से बात कर रहे हो सो बात करो, and you will agree with me कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप कुछ कह रहे हैं और मैं अगर लिखूँ कि मैं अच्छा let me just write down this one, आपने बहुत अच्छी बात कही, you will feel good about it because I'm paying attention to what you are saying. Versus अगर मैं फोन उठा के hold on, क्या हुआ पता नहीं, you got it what I'm saying. So these lists, okay, all the important lists, keep it limited. 4 or 5 lists are fine. उससे आगे होगा तो फिर वो लोड हो जाएगा. Or you can have a combined list of, you know, movies and books and food, everything. Just keep on punching it down so that you can go back and review it. Reflection. 5. Now this is the core journaling part where you write down date. You may choose to have a fresh page or you can continue from wherever the last page was over. अगर आप मेरे जैसे कंजूस हो तो नया पेज नहीं लोगे, उसी पेज से लाइन करके स्टार्ट कर दोगे. इसका एक प्लस पॉइंट ये है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंजूस, एक प्लस पॉइंट ये है कि इस डायरी में ज्यादा चीजें हम लिख पाएंगे. इफ यू स्टार्ट लिविंग द ब्लैंक स्पेसेस देन डायरी जल्दी खत्म हो जाएगी. एंड देन ऑल द थिंग्स विच यू हैव कैरिड, द लिस्ट एंड एवरीथिंग विल हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू डिजिटल. तो वो हम उस पॉइंट पे आएंगे. सो यूटिलाइज ऑल द स्पेस दैट यू हैव इन द डायरी. नाउ अगर आज का दिन है, then let's start, write down today's day. Day is important. हम लोग भारतीय है ना, हम लोग को सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, अभी every day has some flavor. So write down the day, date, month, year. Year लिखना जरूरी because आजकल I think because of this lockdown years इतने fast move होते हैं कि like I sometimes still write 20 and then I wake up so 21 नहीं 2 हो गया. So write down the year, my simple advice. I do that for myself. Okay? उसके बाद फिर start the day begins. It's nice to write time. किस टाइम पे क्या चीज हुई. Right? After the time, it could be activity or meeting that person. So person's name. After that, write that key points of that activity or meeting. की पॉइंट्स. पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है वरना वो फिर सारा वक्त उसी में जाएगा. जस्ट की पॉइंट्स. समटाइम्स यू मे नीड टू राइट इन डिटेल बट मोस्टली इट इज द कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स. देन लीव सम स्पेस फॉर एनी फॉलो अप वर्क. राइट, मीटिंग में या टास्क में कोई काम याद आया जो फ्यूचर में करना है तो राइट डाउन एवरीथिंग विद डिटेल कि फ्यूचर में ये चीज करना है, विच वी विल ट्रांसपोर्ट टू डिजिटल लेटर. बट राइट नाउ जस्ट वन प्लेस ऑफ एंट्री. The second thing usually comes up is some thought, some idea, right? That also with the time, write down the thought or the idea which is hovering in your head. Example, मुझे मेरे phone का case लेना है. Then mostly it happens so कि you will lift up your phone, open the shopping website and start searching for it, right? It will waste your time. If your time is important, then just write down that to research phone cases. Example. Or a laptop sleeve, or something to buy, or something to sell, or whatever. Just a thought, or it could be a wonderful idea about certain philosophical thing.
write it down, because मुझे ऐसा था पहले कि I would lift my phone and start to tweet that thing, which will take away a lot of time. But if I just write it down and I come back to it, तो come back में ये होता है कि the idea has matured over that period of time. Then maybe I can write something even better. So those things, the thoughts. Right now that was point number 5, that data, all the entries, everything. और उसमें ऐसा है कि the more you write and you keep on writing, that format will improve. आपको खुद मालूम पड़ता जाएगा कि और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, और इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे इसमें डाल सकते हैं, और सब कुछ डाल सकते हैं. एवरीथिंग, योर थॉट्स एंड आइडियाज एंड मीटिंग्स एंड योर लर्निंग्स एंड एवरीथिंग, जो भी दिन में हो रहा है उसकी अगर नोट्स की जाए तो योर माइंड विल बिकम अनबर्डन. उसका सारा जो भार है वो कम होता जाएगा, बिकॉज एक ट्रस्टवर्दी डिवाइस में आपने सारी चीज़ें लिख दी हैं. इट्स नॉट जस्ट कि आपने किसी को कह दिया या डायरी को कह दिया है, नो, इट्स नॉट दैट. आई थिंक योर वर्किंग मेमोरी, हमारी दो होती है. एक होता है पूरा स्टोरेज, एक होती है वर्किंग मेमोरी. लाइक एक टेबल है और एक क्लॉजेट है, राइट. टेबल की स्पेस लिमिटेड होती है, तो जब हम लिख देते हैं चीज़ों को तो टेबल स्पेस खुल जाती है, तो योर ब्रेन फील्स लाइटर, बिकॉज यू फील सो मच सॉर्टेड कि सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, जो मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, देख लूंगा, एंड आई विल फॉलो इट अप. तो जो स्ट्रेस जो इंक्रीज होता है एज यू वेक अप ड्यूरिंग द डे, कि काम कितने सारे किए, कुछ फॉलो अप है बट मैं भूल रहा हूँ, ये सारा स्ट्रेस बिल्डअप होता है, जिसको हम इस टेक्निक से रिड्यूस कर सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट डाउन एवरीथिंग. एंड ये याद रखना जरूरी है कि डायरी में लिखना है, बिकॉज दैट ऑल्सो इज समटाइम्स फॉरगॉटन. बट यू कैन कम बैक एंड राइट डाउन द टाइम एंड लिस्ट डाउन द इवेंट, and it will make you feel good, peaceful. Let's come to point number 6, using colors, right. तो मैंने अभी भी लिखा था कि it's better to write with just one color which is black, ताकि reading में easy रहे. You can have your choice. This is my format I'm sharing with you. Write with black everything, and I have a 4 color pen. बहुत दूर है, कभी दिखाऊंगा. I have posted on Twitter, you can check. So write with black. Now everything which is urgent, important, and like must, use red pen and circle it or box it or star it, so that you know कि ये attention इस पर देना है, extra attention. Then number 2 color is green. Everything which will require thinking, on focus, उस पर सोच विचार करना है, यूज ग्रीन, राइट. एनीथिंग, ब्रैकेट, स्टार, एनीथिंग, बट काइंड ऑफ सर्कल दैट थिंग विथ ग्रीन कलर और अंडरलाइन. एंड द थर्ड थिंग इज, बिकॉज 4 ही कलर है हमारे पास पेन में, देन दैट्स गुड इनफ टुडे. with blue, everything which is future oriented. Some task which is not serious, urgent, important, but it's a task, it's something to do, something to follow up. I use blue color. That gives me enough clarity. उसके बाद फिर चीज़ें complex कर सकते हैं, but let's stick to this one. This is a simple game we can play and keep on playing. Now we come to point number 7. कि ये सारी चीज़ें apps में available है, digital platforms, be it laptop, mobile phones. Why not we use that thing? Why this old school diary and pen and everything? I think number one point is, and maybe I'm old school, but trust me, everybody is old school in this case, because we are humans, right? Billions of years of evolution, and हमने अभी कल ही तो technology जानी है. It's not even कल, it's like few minutes back. In the whole history of evolution, we are still old school people, like old as possible. So writing is something which very use your brain, your hand, and a lot of cognition to write that thing. Is more like an artwork. If you know how to write, you're an artist. You're constantly creating something if you're writing. It doesn't have to be elaborate poetry. Whatever you're doing is art in its own way. Right? So why write and not digital? And I think Parikshit will agree with me that he is fan of writing just like me. And yes, some apps are useful, and like we said कि हम बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे डिजिटल में. प्राइमरी जो रिसीविंग स्टेशन है वो आपका डायरी इसलिए है कि
डिजिटल में एक तो डिस्ट्रैक्शन होता है, बिकॉज वेन एवर आई हैव सीन दैट नो मैटर हाउ रिजोल्यूट यू आर, जब फोन खोलते तो चार चीजें ऐसी होती है जिस पर आपका ध्यान जाता है. समटाइम्स वी फॉरगेट द प्राइमरी थिंग, करना क्या था वो निकल जाता है, बाकी सब कुछ होता है. एंड इट्स वेरी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन, बिकॉज काफी सारी चीजें इस तरह से लीकेज में चली जाती है विच शुडंट हैपन. सो अगर प्राइमरी टूल पेपर है, हार्ड पेपर एंड पेन, then it is much more peaceful, reliable, and it gives you satisfaction over a long run. Like primary single एक जर्नल है जिसमें सब कुछ आ रहा है, so you know कि यहाँ तो होगा ही, फिर कहाँ गया शायद डिजिटल में गया नहीं गया, but this is my safe and reliable place. Therefore it is writing is therapeutic. And there's a lot of freedom also. You can do your Google doodling, your pictures, your mind map, right? Everything is possible right away without any external dependency. Yes, Mandar is right that all senses are connected while writing by hand. That's my experience too, and I agree with you that it's like a meditation. It's just everything is right now. And again, going away from digital is what we all need to some extent, right? And keep remembering that we have learned writing and all. We need to preserve this thing. I think looking at like next 100-200 years, I think that writing will be like a very special skill. जैसे वो knitting है आज की सबको नहीं आती है, and then people will remember that my ancestors used to write with hands. We are the ancestors. Let's maintain that thing. It's for fun. I'm not झंडा ऊंचा रहे वाला सीन नहीं है कि preserve writing. I don't know what future is going to be, but I like writing and I think it's a wonderful skill. It makes you feel good. Therefore लिखना जरूरी है. लिखने में मजा आता है तो लिखिए, जबरदस्ती नहीं है. Point number 8 is when you start writing, काफी चीजें नई सीखने को मिलेगी. स्कूल वाला सीखना नहीं, डरावना सीखना नहीं, राइट? इन लाइफ यू विल ऑब्जर्व मेनी थिंग्स जिसमें आपको पता चलेगा कि ये कभी इस तरह से इस चीज को देखा नहीं था. सो उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, लर्निंग. That will be a profitable venture when you start writing, because you will take note of even the smallest things about people around you, about children, about your loved ones, small details. If you're learning some specific subject, you will learn better because आप उस चीज को लिखने वाले हो in the future. So like I'm talking to you right now on the subject of writing. At the end of the session, I will write down my crisp takeaways, learnings. I'm feeling better when I'm talking to you about this subject. I already am feeling better compared to last time. So I think that assuring myself that I'm going to reflect, मैं जो भी कर रहा हूँ अभी, makes me go deeper into this experience. So there's a lot of learning side. That's huge, right? And that is why सारे so-called, let's say, inspirational speakers or all the great people push all of us to create journal, to maintain journal and write everything, anything. उनको बहुत मजा आया होगा, इसलिए वो इतना जोर से हमको कहते हैं. हम लोग सुनते नहीं ज़्यादा, but again I just want to highlight that thing and make sure that it becomes important to all of us. Point number 9, and that's I think similar to point number 1, but I want to make sure that जर्नल लिखना लोग बंद क्यों करते हैं, मेरे जैसे लोग जिन्होंने बंद किया है, बिकॉज हम लोग भूल गए थे कि रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. गो बैक पिछले कुछ पन्नों में एंड देन जस्ट गो थ्रू व्हाट हैपेंड, बिकॉज उसमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है. यू रिमेंबर मैनी थिंग्स जो बाकी थी, कुछ फॉलो अप काम है, कुछ सोचना अधूरा रह गया था, उस चीज़ पर थोड़ा डीप में फोकस करना ज़रूरी है. ऑल दोज थिंग्स कम थ्रू रिफ्लेक्शन. और अगर रिफ्लेक्शन जिस दिन रुक जाएगा उस दिन जर्नल लिखना रुक जाएगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन से योर ब्रेन गेट्स सर्टन हैप्पी हॉर्मोन्स, एंड विथ दैट हैप्पी हॉर्मोन्स यू विल कंटिन्यू राइटिंग बिकॉज मजा आता है. सो इट बिकम्स लाइक अ लूप. यू राइट, दैट्स वन पार्ट, बट यू रिफ्लेक्ट एंड देयर इज जॉय एंड देन यू अगेन राइट. सो इट्स लाइक जैसे वर्कआउट में हम कहते हैं कि व्हेन यू डू गुड, नाइस, मॉडरेट वर्कआउट, you feel happy at the end and therefore you want to do it again. Reflection is like that. It's the generation of happy hormones. So it's very, very important that you reflect. कब reflect करना है, तो I think best strategy is that every day fixed time पे किसी चीज को reflect किया जाए. That's reliable. But apart from that, any time is good.
बट मोस्टली व्हेन द डे बिगिंस फर्स्ट रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, कल क्या हुआ था, कुछ फॉलो अप काम था, कुछ सोचना था, कुछ करना था, एंड देन स्टार्ट द न्यू डे. दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी and it always works. So it becomes very simple, effortless process. And the last point, this is the most important point, that हम क्यों ये चीज़ कर रहे हैं. तो मैंने कल एक पोल रखा था कि is it therapeutic, it's a growth tool, it's my secret hideout, or it's my superpower. And Nitisha asked me that can all four be the, yes options, and of course yes, you are right. But sometimes कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा important होती है, so it's like that. So it's like not they all apply, but something applies like more than other, and so on. Present moment awareness और mindfulness की हम बात करते हैं, and there are so many methods and schools and techniques and such, and people keep trying. I think this one, writing everything in a journal format, is the single most reliable and 100% effective, productive tool for this, for meditation. Why? Many things. एक तो ये होता है कि when you reflect, right, and like you said, reflected life is the best life lived, ऐसा कई लोगों ने कहा है. It comes naturally, Mukesh. I think joy is natural. Joy cannot be pushed. It's a byproduct. And when it is byproduct, it's the best thing. When you start to seek joy, I think मेरे केस में ऐसा लगता है कि then I think we scare it away, we push it away. So it's a byproduct. When you do certain things, it comes naturally. It's like you cannot sleep. When you lie down, the sleep comes. Right? You cannot generate love, but with some people that feeling of love just comes up on its own. So it cannot be a programmed meditation, then we will kill it. So when you reflect, a lot of things happen, right? Your mind becomes calm, becomes sorted. Also gratitude. काफी incidents अच्छे बुरे जो भी हुए हैं, when you look back on them and if you look carefully, you will find that there is something जिसके लिए आप आभारी हो. You have gratitude for certain things, people, incidents, experiences and everything. Then that makes you feel that yes, life में जो हो रहा है, it's like a ladder, it's every step. Sometimes you feel you are going down, but that's also part of the journey to go up again. It's not necessary to go up because there is no up or down. The space doesn't have any north, south. Planets are round, सब गोल गोल घूम रहे हैं. You just start mental understanding that कुछ up है और कुछ down है. So everything is like a journey. The second thing becomes that every smallest incidents become important for you क्योंकि आप उसके बारे में लिखोगे. तो जो अभी कर रहे हो उस पर इतना attention, इतना awareness और presence होगा आपका, बनता जाएगा, that you will feel different, सामने वाला भी feel different about you. And it's just like very simple way to become aware in the present moment because you are looking at every experience with full awareness, full intensity. That's the word. And it's just kind of gets more richer and richer because हर एक incident, हर एक conversation, हर एक experience में कुछ छुपा हुआ है जो आप तब देख पाओगे जब आप carefully वहाँ पर हाजिर होंगे, present होंगे. And then eventually you will write about it, or even on the spot you are writing about it, you are reflecting on it. So you have some sort of microscope for every single fraction of time passing in front of you. You will not be in the blind mode or in the zombie mode, living life as if it's going, right? That's fine, that's one way to live, but even as zombie, when you observe things, it's beautiful. And actually it's kind of a contradictory statement that don't live like zombie, but when you are in the mode of absolute witnessing, it is similar. The degree is that zombie is asleep and a witness is awake. Both are watching. Both are not interfering with things, but they are watching with full intensity. So that is the maximum high point, I can say, of writing, that you become a person who lives in the present moment. और फिर वो intensity by and by
keeps on growing, your level of joy keeps growing, and you are less dependent on any external stimuli for pleasure. जो हम हर 7 seconds में फ़ोन चेक करते हैं, उसका रीज़न ये है कि वी आर सीकिंग प्लेजर, राइट? इट्स फाइन, इट्स अ ह्यूमन थिंग, नथिंग अगेंस्ट इट. कभी मैं भी ऐसे करता हूँ, सो पार्डन मी. बट टू रिप्लेस this external dependence with internal independency, right? We are still probably dependent partially on paper and pen, but eventually you come back to yourself, and it's much more slower pace work, intense in the present moment, that it just keeps on giving you joy without being dependent on anything external, because यहाँ पर आप create कर रहे हो. When it comes to external devices, you are just a consumer. And when you start creating, even if it is the smallest thing, that spirit of creativity keeps growing. You are strengthening the creativity muscle in your mind. So that's, I think, the whole structure for today's talk is mind your own business. And this is how you can mind your own business, because whatever you are doing is important. And if you give respect to yourself, you start giving importance to yourself, you will take note of everything. किस तरह से करना है वो मैंने आपको बताया. This was a simple framework, you can add into it, but I think that keeping it as simple as possible ज़रूरी है, ताकि वो चलता रहे. बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया तो फिर वो रुक जाएगा कहीं पर, इसलिए ज़रूरी ये है कि एक सिंपल स्टार्ट हो. And I have shared all these 10 points today, very crisp. Hope it will help. And now if someone wants to join and share and make me happy by sharing, please do that.